everyone. My name is Misha Irshad, and I'm a speech language pathologist. And we, together with my facilitators, co-founders Sahar and Faria, we created this community to make speech therapy easy for all. So during the webinar, try to keep your mics closed and cameras off. And if you have any questions, just drop them in the chat section, and one of our facilitator will get back to you as soon as we end the webinar. So I'm going to ask Ms. Fariha Bukhari to introduce herself. Over to you, Fariha. Please turn on your mic. My name is Fariha Bukhari and I'm a speech language therapist by profession, and I have over 10 years experience in my field. And my area of expertise is voice disorders, hearing impairment and communication disorders. And I have worked through various ratio of pediatric population and adult population. Now over to Sahar. Ms. Sahar Ilyas, can you please introduce yourself? Let's just wait for a while. Thank you everyone for joining this webinar, and we look forward to continue these series like one by one. So today is just an introductory session. So in order to just let you know that we have picked up a basic topic, and based on that, we're going to build our webinar series. We're just waiting for our co-founder to start her introduction. In the meanwhile, you guys just watch another video of our introduction. Ilyas is here, so can I request Ms. Sahar Ilyas to introduce yourself? Yes, Ms. Sahar. I'm Sahar Ilyas. I'm speech and language pathologist, and I have over 9 years of experience in this field. And I have special interest for early intervention and with children with language difficulties, communication difficulties, and autistic children. Thank you. Thank you, Ms. Sahar. So with that, everyone, we are going to share our PowerPoint presentation. And keep in mind that you guys can just ask any questions, just drop them in your chat box, and one of our co-founder and facilitator for this webinar will get back to you at the end of the session. So just don't worry, we are going to answer all of your questions. So let's just begin this webinar. Thank you so much. So Ms. Fariha Bukhari is going to start this webinar. So we have divided this presentation into 3 parts, and accordingly, we are going to present our parts. And in the meanwhile, you guys can just put your questions in the chat box. Over to you, Ms. Fariha. Okay. So as you all know that today's topic of our webinar is blank level of questioning, और मेरे ख्याल में मुझे आप सबसे खास तौर पे अपने फॉलोअर्स से बात करने के लिए दोनों लैंग्वेजेस का एक्सपोजर देना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स भी हमें ज्वाइन करेंगे in the meantime, और I hope कि आप सबको इस कंटेंट से ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो. So as you can see on the screen that topic is blank levels of questioning. इससे पहले थोड़ा सा I think that I should elaborate the importance of the blank levels of questions and what are blank level of questions. So blank level of questions, basically these are a set of questions, or you can say it's a series of questions जो कि हम अपनी daily life activity में as a professional, as a speech language therapist, as a remedial therapist, लोगों की बच्चों की जो स्पीच है और कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज है, उसको डेवलप करने के लिए हम इन लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस को अप्लाई करते हैं, एंड वी आस्क सम स्पेसिफिक सेट्स ऑफ क्वेश्चन टू स्टिमुलेट द चाइल्ड्स ओरल लैंग्वेज, टू स्टिमुलेट द चाइल्ड्स वर्बल रीजनिंग, प्रेडिक्शन. और इसी के साथ साथ यही ब्लैंक लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, एक पेरेंट जो है अपने बच्चे के प्रेजेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग को टारगेट करने के लिए, लाइक इफ दे आर वाचिंग देयर चाइल्ड एंड लैंग्वेज एंड दे आर मॉनिटरिंग द प्रेजेंट लेवल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द चाइल्ड एंड दे वांट टू इम्प्रूव एंड टू पिंच द desired level of language, तो ये blank levels of questions जो हैं उन पेरेंट्स को और उन केयर गिवर्स को अपने बच्चे की
ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करने में हेल्प करते हैं. आई नो अंडर द सुपरविजन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ अ प्रोफेशनल, अंडर द गाइडेंस ऑफ अ स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट. और नॉर्मली जो क्वेश्चंस हम अपनी डेली लाइफ में अपने बच्चों के साथ करते हैं, कहीं ना कहीं दे आर टारगेटिंग our child's verbal reasoning and their thinking and comprehension. तो आई थिंक ब्लैंक लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, जो इनका जो एक रोल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन आवर चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन हिज कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट. और इसी के साथ साथ कैसे वो दूसरों लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है. और अगर हम लोग सस्पेक्ट करते हैं एज ए थेरेपिस्ट इन दैट देयर इज अ लूप होल, देयर इज अ डिले in the communication, in the language part, तो हम इन ब्लैंक लेवल्स को थेरेपिस्ट को, टीचर्स को, पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं, सो दैट दे कैन यूज दीज strategies with the help of these levels in their structured activities. तो सबसे पहली चीज जो हमें इसका एक सिंपल सा जो इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है कि ये ब्लैंक लेवल क्वेश्चनिंग हेल्प किस चीज में करते हैं, किस चीज को टारगेट करते हैं, किस चीज को एम करते हैं. सबसे पहली चीज होती है इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर चाइल्ड, दैट व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन टू योर चाइल्ड इज ही अंडरस्टैंडिंग योर क्वेश्चन. बिकॉज जब तक वो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा, ही विल नॉट बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. इसी के साथ बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन कितनी है, इज दैट कॉम्प्रिहेंशन इज एज अप्रोप्रिएट और इट्स अंडर एज. अगर हमें लगता है कि वो अपनी एज के साथ इन चीजों को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा, तो दैट्स द नीड दैट वी शुड कंसल्ट अ स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट टू make these levels incorporate into the therapy procedure. और बच्चे की जो लैंग्वेज है उसको इम्प्रूव करवाने के लिए हम इन क्वेश्चंस को यूज कर सकते हैं. यही क्वेश्चंस जो हैं बच्चों की वर्बल रीजनिंग को भी टारगेट करते हैं. जैसे कि हमारा एक एवरीडे रूटीन होता है जिसमें हम वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस बच्चों के साथ करते हैं, और वो करने का मकसद भी यही होता है सो दैट दे कैन स्टार्ट क्रिटिकल थिंकिंग, दे कैन स्टार्ट एडवांस लेवल ऑफ थिंकिंग, सो दैट दे कैन मैनिपुलेट द क्वेश्चन एंड दे कैन फॉर्म द सेंटेंस, दे कैन आंसर द क्वेश्चन इन देयर कैपेबिलिटी. वो जैसे भी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंगली उस क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं, दे कैन यूज इट एंड वी कैन हेल्प देम. और इसी के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक बहुत क्रिटिकल पार्ट होता है एक बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में, जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं और इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते, मॉनिटर नहीं कर रहे होते, चेकआउट नहीं कर रहे होते, एंड देन दे रिपोर्ट टू अस कि जी हमारा बच्चा जो है वो हमें लगता है कि एज अप्रोप्रिएटली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा. तो ये लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं इन 4 चीजों पे बेसिकली टारगेट करते हैं, और जो इनके सेट्स हैं, इनके जो लेवल्स हैं, वो इन्हीं चीजों पे डिपेंड कर रहे होते हैं. Can you please move to the next slide? Okay, so these levels of questioning were developed by Blank, Rose and Berlin in 1978. और ये जो लेवल्स ऑफ क्वेश्चनिंग है बेसिकली इन लेवल्स ऑफ क्वेश्चनिंग को अगर हम थोड़ा सा पार्ट्स में डिवाइड करें सो दैट वी कैन मोर इलैबोरेट ईच एंड एवरी लेवल. और हर लेवल की आगे जो इलैबोरेशन है, माय फैसिलिटेटर्स एंड को-फाउंडर्स विल बी इलैबोरेटिंग दीज स्टेप्स, लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन अबाउट द ब्लैंक लेवल्स ऑफ क्वेश्चनिंग. सुनने में ये एक बड़ी फैंसी सी टर्म लगती है कि ब्लैंक लेवल्स ऑफ क्वेश्चनिंग कुड बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल और ये कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की स्ट्रैटेजी है, बट जब हम इसको जानेंगे और समझेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि यही चीजें हमारी डेली लाइफ एक्टिविटी में यूज भी हो रही होती हैं, बट हमने कभी इनको पॉन्डर अपॉन नहीं किया. So these questions move from a very simple questions to more concrete questions in comparison to the child's development. Rather, he is developing his age, mental age, physical age, and language age. Concrete के बाद एक जो stage आती है, that is the difficult level of questioning. Like if a child is developing through the age, तो simply हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे जैसे वो develop कर रहा है, more complex age की तरफ जा रहा है, इम्प्रूव कर रहा है अपनी रीजनिंग, तो हम इन क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पर ले जाते हैं. एंड द लास्ट वन इज द एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चनिंग. एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चनिंग मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जिसमें हम बच्चे को ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, जिसमें ही कैन मेक अ वैरायटी ऑफ आंसर्स बाय कीपिंग इन माइंड इनटू हिज ओन एबिलिटी. So there are 4 blank levels of questioning. हर level of questioning को एक
स्पेसिफिक नेम दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर जब आप एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो आपको फिर पता चलेगा कि ये जो नेमिंग है इनकी क्यों दी गई है, एंड हाउ दे आर रेफरिंग टू देयर ईच क्वेश्चन. सो लेवल 1 इज नेमिंग, जिसमें कुछ सिंपल आंसर्स क्वेश्चंस होंगे जो यू कैन आस्क के, कोई पॉइंटिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ लेबलिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें नेमिंग कर सकते हैं बच्चे. तो दैट is the simplest form, simplest level of questioning in the blank level. So you can say it's an initial level, जिसको हम naming का नाम हम देख रहे हैं कि इसका नाम है naming. And the second one is the level 2, which is a describing. So from naming, from one word, from a simpler answer to a more elaborative answer, in which we give an opportunity to a child to describe his answer in his own way. And then comes the level 3, that is the identification. We give more chance to the child, so he can pick the thing and he can answer the question properly. And the level 4 is prediction, in which we refer to the prediction and problem solving level. So these 4 levels will be elaborated by by the facilitators. And moving toward the next slide. So this was the introduction of my part, and hope Miss Misha will be answering and elaborating others level of questioning. So over to you, Miss Misha. Thank you so much, Ms. Fariha. That was a good introduction, so that everybody can get an understanding what we're going to cover today. So everyone, I'm going to cover level 1 and level 2, and level 3 and level 4 will be covered by Ms. Sahar Ilyas. So let's get back to our presentation. Okay, everyone. So as just quick recap what Ms. Fariha Bukhari has explained it to you, that blank level of questioning is a hierarchy how in which a parent and an educator should talk to their child. Now, अब मैं कोड स्विच करूंगी लैंग्वेज को अपना, ताकि मैं आसानी से आप लोगों को समझा सकूं. लेट्स जस्ट मैं उसको थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो हर चीज के बारे में सवाल करते हैं. इसी तरह ये जो पहला जुमला आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको कि क्वेश्चनिंग इज द की टू लर्निंग एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, नॉट जस्ट इन लिटरेसी बट अक्रॉस द करिकुलम. सो कहा जाता है कि डेवलप अ क्वेश्चनिंग माइंड. डेवलप अ क्वेश्चनिंग माइंड, जितना आप सवाल करेंगे उतना ज्यादा यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न मोर. इट्स जस्ट दैट इट्स spread across the curriculum. So that's how this model is based on. इसकी basis इस concept पे बनाई गई है. The more you question, the better you learn. And उससे ये होगा कि आपकी language develop तो होगी, लेकिन साथ साथ आपकी literacy में भी इजाफा होगा. That's why teachers use this model while stimulating their students' language, or an early educator or an remedial therapist who are trained in this particular hierarchy. अब बात करते हैं कि पेरेंट्स और एजुकेटर्स उनके लिए क्यों जरूरी है. काफी दफा हम बहुत सारी चीजें जानते हैं बट वी डोंट नो व्हाट्स द फर्स्ट स्टेप, कि स्टार्ट कहाँ से करें. तो इसलिए पेरेंट्स और एजुकेटर्स काफी कंफ्यूजन के साथ आ रहे होते हैं कि वे टू स्टार्ट फ्रॉम, कि अब तो ये क्वेश्चन कर रहा है. काफी दफा ये करते हैं, गोइंग बैक टू व्हाट मिस फरिया हैज कवर्ड, दैट इसमें सिंपल, डिफिकल्ट, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन आते हैं. वो क्या कर रहे होते हैं, कभी कभार एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट कर देते हैं. तो इसीलिए चीजों को बहुत बेसिक चीजों से स्टार्ट करना है. इसलिए to get surety where to start from, to get clarity. And the last sentence on your screen says it's like one good method often used in speech development is the level of questioning. These levels, as she has told earlier, just a quick recap, that were developed by Blank, Rose and Berlin in 1978 in US and in entire curriculum, because that's how they build up on the language series, that वो किस तरह से बच्चे की लैंग्वेज को स्टिमुलेट करते हैं. इसी मॉडल को मिस फरीहा ने आसान अल्फाज में बताया था इन द प्रीवियस स्लाइड कि ये 4 लेवल्स होते हैं. अब इसकी तो टेक्निकल नेम ये है कि पहले लेवल को मैचिंग कहा जाता है, दूसरे लेवल को सिलेक्टिव एनालिसिस कहा जाता है, तीसरे लेवल को रिकॉर्डिंग कहा जाता है, फोर्थ को रीजनिंग कहा जाता है. अब परेशान होने वाली बात नहीं है कि ये सारे नाम वो टेक्निकल हैं जो इस पे आप मैप कर सकते हैं कि लेवल 1 नेमिंग भी है, लेवल 2 डिस्क्राइबिंग भी है,
लेवल 3 आइडेंटिफाई है, लेवल 4 प्रिडिक्शन है, जिसको मैंने यहाँ पे दूसरे नाम दे दिए, 1 को मैचिंग किया दिया, सिलेक्टिव एनालिसिस, recording and reasoning, they are same names. Now let's just start with the levels. Like, what do you cover in level 1? So level 1 is matching perception. You are talking about an object that's present in your real life. For example, I have this hairbrush in my hand, so it's right here. So the answer is right in front of you. So apply language to what is seen. So I include इसमें जो भी question की series मैं next slide में cover करूंगी, लेकिन a quick intro कि इसमें कौन-कौन से question include होंगे, matching के, आइडेंटिफाइंग के, आइडेंटिफाइंग एन ऑब्जेक्ट एंड नेमिंग ऑब्जेक्ट. तो इसका दूसरा नाम इसको इस तरह से कहा जाता है लुक एट इट, कि आप चीजों की फिजिकल चीज पे बात करें, यू नो, नेमिंग नाउन्स एंड एवरीथिंग. अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज क्वेश्चंस, अब का माँ बाप पूछते हैं कि इसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी एज पे आ जाती है. तो इस लेवल 1 की जो अंडरस्टैंडिंग होती है इज डेवलप्ड एट द एज ऑफ 3 years. सो इसकी अप्रोक्सीमेट एज 3 years है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, लाइक पूछें क्या क्वेश्चंस पे बात तो कर ली. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट क्वेश्चंस. सो पहला क्वेश्चन ये होता है कि फाइंड वन लाइक दिस. तो अगर आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है तो आप उसको कह सकते हो बच्चे को कि कैन यू फाइंड समथिंग लाइक दिस. सो अगर उसकी विसिनिटी में सिमिलर थिंग ब्रश पड़ा होगा सो दैट ही और शी कैन ब्रिंग. नेक्स्ट आपका आ जाता है कि नेमिंग, व्हाट इज दिस. सो nouns like what is this, like the child will know immediately now that's a hairbrush. इफ नॉट देन पहले तो आप उसकी नाउन्स पे डेवलप करते हैं. 3 साल के बाद पहले आप उनकी नाउन्स वगैरह पे काम करके नाउ हाउ टू डेवलप द आंसरिंग सेशंस. पहले तो हम बच्चे को क्विज नहीं कर रहे थे ना, वी आर जस्ट गिविंग द लैंग्वेजेस. नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड क्वेश्चन, इमिटेटिंग अ सिंपल सेंटेंस. आई कैन से दैट लाइक I love you, the child can imitate. I love you, I like ice cream. The child can imitate. I like ice cream. So imitation is the key to learn language. That's why it's also included in this slide. And remembering an object in the book. For example, we promote as speech language pathologists, as parents, we promote book reading because it's very good for cognitive development and language development. That's why when you're reading with a child who's 3-year-old, you are pointing just objects, like literally the nouns. So you can ask the child, what did you see? What did you see? What did you see? So you have a book, like first word book. So you can ask the child, what did you see? Oh, apple. Let's flip the page. What did you see? Oh, banana. Let's flip the page. And then remembering, now last question is remembering seen/done. So इसका मतलब ये है कि आपने बच्चे को एक पिक्चर दिखाई, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने बच्चे को पिक्चर दिखाई है एप्पल की, तो मैं उसको फ्लिप कर दूंगी, तो मैं उससे पूछूंगी व्हाट डिड यू सी. तो मैं बच्चा कहेगा बनाना. सिमिलरली इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए वॉच द स्लाइड. नाउ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जैसे एरोप्लेन, लाइक टॉकिंग अबाउट, लाइक यू कैन ऑल्सो कॉमेंट ऑन दी हेयर, लाइक नॉइज पार्ट, लाइक व्हाट कैन यू हेयर, व्हाट्स लाइक व्हाट डिड यू हेयर व्हेन यू आर गोइंग आउटसाइड एंड द चाइल्ड सीज अ प्लेन. बच्चे ने हवाई जहाज देखा है तो उसकी आवाज आ रही है, तो व्हाट डिड यू हेयर, लाइक इट्स एन एरोप्लेन साउंड. और फिर उसके बाद what sound does a motorbike make? तो motorbike का क्या sound हो सकता है? So you can comment on the physical properties as well and on the auditory part as well. And now what is the boy doing? So you can show the picture. The वही last वाले question पे what is being done over here? So you flip the picture and ask the same question. What is the boy doing? The boy is driving. Now the activities. What activities should we do in order to just generalize this concept? आ जाती हैं कि ask level 1 questions. अब सारे क्वेश्चंस ये तो आपने पढ़ लिए ना, अब इन्हीं को आप जनरलाइज कर सकते हैं while reading a book. Questions from everyday life as I've shown you in this slide. With that, I've covered level 1, and if you have questions related to level 1, just drop them in the chat box. Now coming to level 2. Level 2 is about selective analysis of perception, जिसको हम कहते हैं, पहले को हम कहते थे look at the object. Now we're going to talk about the object, talk about it, think and search. So the answer is in front of you, but you need to look for it. A bit of thinking skills start in this level, a bit of cognitivity starts in this level. Focus on specific aspects of the question. So it includes identifying objects by functions, describing and making basic classifications. So understanding of these questions develop approximately at 4 years of age. Like approximately word is written like a child can, like earlier 3.5 पे भी इसको अचीव कर सकते हैं, लेकिन approximately 4 साल तक हो जाती है. और बेसिकली कहा जाता है कि हमारी नॉर्म्स बाहर की नॉर्म्स पे नहीं है, लेकिन like I've been practicing for the past 7 years and I've seen that this actually maps on our norm as well, कि 4 साल तक ये क्वेश्चनिंग आ ही जाती है. अब बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस.
लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे लेवल 2 के क्वेश्चंस में, वो ये आपकी स्क्रीन पे है। नंबर 1 आपका आएगा फाइंड समथिंग दैट कट्स। सो I can ask the child, like, can you find something that, because the object is in front of him, like I can put two objects, so I can ask him, like, can you find something that cuts? And the child immediately points the picture, or if the object is in front of the child, बच्चे के सामने अगर object पड़ा है तो वो उठा के दे देगा मुझे, can you something like it's like we use scissors, like इसमें बोलना नहीं है, बस just that child understood and he gave you just the object जिसके बारे में भी आपने पूछा था. Now describing a scene. So describing a scene में ये वाला scene आपके सामने, I can ask the child, can you describe what is in this picture? So बच्चा मुझे कह सकता है इसमें बहुत सारी गायें हैं, दरख्त नजर आ रहे हैं, और ये एक फार्म हाउस की पिक्चर है, मोस्टली काउ फार्म की पिक्चर है, ठीक है. Now recalling information from a statement, what things we use for writing, you know, what things we use for writing. Stationery की बातें आ जाती हैं. Oh, what we can use a pen, a pencil, a marker, a crayon. ठीक है, ये third question. Now coming to the fourth question, completing a sentence. Like जिस तरह auditory closure में हम बच्चे को कह रहे होते हैं, finish this. I like to color. I like to eat ice cream, or something like that. Make it more playful, make it more fun. As a parent, as your therapist, I believe that everyone has their personal style. Now coming to the next question, attending to two characteristics. So now when you talk about two characteristics of a certain object. For example, the question that I've written on your screen is find something that is sweet and red. Immediately हमारे दिमाग में एक mental map बनना शुरू. What is sweet and red? Oh, like it can be a strawberry as well. I've written an apple. If a child can say like strawberry, you can also take that. If a child can say cherry, you can also take that. Something that is similar to both those qualities. But if you want to make it more concrete, आप ऐसे कह सकते हैं, find something that is hard and a fruit. Sorry, इसमें तो अब मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा, मैं इसको और simplify करती हूँ. Find something that is a fruit and is red. So immediately it comes to your mind, an apple. So something like that. Identifying differences. आप इसको और भी कर सकते हैं, और भी characteristics add कर सकते हैं, लेकिन वो next level में चली जाएंगी. ठीक है? Now coming back to the second last question, how are these two different? So I can show a child these like a phone and a hairbrush, and I can ask them, him or her, like, how are these two different? अगर हम बात करें सिमेंटिक कैटेगरीज की, मैं टेक्निकल टर्म यूज कर रही हूँ. सिमेंटिक कैटेगरीज वो होती हैं जो सर्टेन क्लासेस की क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, फ्रूट्स, एनिमल्स, ट्रांसपोर्ट्स. तो अब मैं अगर दो डिफरेंट कैटेगरीज, ये मुझे डेली लाइफ यूज के लिए ब्रश है और दिस इज समथिंग यूज, ये दोनों एक कैटेगरी में तो नहीं बिलोंग करते ना, ऑब्वियसली नहीं करते. ग्रूमिंग के लिए यूज होता है, देयर इज समथिंग फॉर कम्युनिकेशन. सो यू कैन मेक इट मोर इजियर बेस्ड ऑन योर चाइल्ड्स लेवल. आप बच्चे के लेवल पे जाके जा सकते हैं बेस्ड ऑन योर क्रिटिकल थिंकिंग. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है, यू कैन आल्सो ड्रॉप अ क्वेश्चन एंड वी विल बी हैप्पी टू मेक इट मोर सिंपलर. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, नेमिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ कैटेगरी. ठीक है, अब कैटेगरी के जिस तरह मैंने मिसाल दी है कि सिमेंटिक कैटेगरी की सर्टेन, लाइक फाइंड अ फ्रूट. सो समथिंग लाइक, ओके, what's a fruit, like orange, strawberry, banana. I can also ask find something, find a stationery. So somebody can pick up a pen or a crayon or something. I will count that. So these are the list of level 2 questions. Now let's just talk about activities. आप इसको किस तरह practice कर सकते हैं. So on your screen मैंने पहले तो आपको बता दिया कि आप इसको pictures के through कर सकते हैं. दे दो scenarios हैं. You can use the same set of questions based on, you can use the same set of questions based on these slides. So आप इन स्लाइड पे मैप कर सकते हैं. एंड देन लास्ट में एक आखिरी एक्टिविटी है, बैरियर गेम्स. ये आपकी स्क्रीन पे जो इस टाइम ये दो बच्चे बैठे हुए हैं, इनके दरमियान एक बैरियर है. उस बैरियर में अब आप ये देख रहे हैं, ये बैरियर गेम आप आपस में भी खेल सकते हैं. एक बस किसी चीज को बैरियर की तरह रखेंगे. ये बैरियर एक फाइल भी हो सकता है कि दो बच्चे अपना बस प्ले नहीं देख सकें. तो एक बच्चा इंस्ट्रक्शंस दे, दूसरा उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उसी तरह का कुछ रिक्रिएट कर दे अपनी एरिया में. तो यहाँ पे ये डॉल हाउस का कोई घर बना रहे हैं, तो बच्चा उस बच्ची को इंस्ट्रक्शन दे रहा है और इसी तरह उस बच्ची ने अरेंज कर दिया है अकॉर्डिंगली. अगर आप लोगों ने आपस में खेलना है तो आप एक बंदा क्लाउन बनाए और फिर उसके बाद आगे करें. कमिंग गोइंग फोर्थ टू like my part over here is done and I am just
stopping over here and handing over the presentation to Ms. Sahar Ilyas, our facilitator for the last two levels. ओके, तो अभी जैसे मिशा ने लेवल 1 और लेवल 2 को बहुत डिटेल में आपको डिस्क्राइब कर दिया है, एंड नाउ वील मूव ऑन टू लेवल 3 एंड 4. लेवल 1 और 2 जो थे दैट वर रिलेटेड टू कॉन्क्रीट लैंग्वेज, और इस तरह बच्चे की एक नेचुरल लर्निंग होती है. पहले कॉन्क्रीट लैंग्वेज होती है जिसमें लाइक व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, एबिलिटी टू, जो बच्चा सुनता है, देखता है, टच करता है, उन चीजों के बारे में हम क्वेश्चंस करते हैं. बट लेवल 3 एंड 4 से चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाती हैं, और हम उन स्किल्स को टारगेट करते हैं जिनको हम रीजनिंग स्किल्स कहते हैं या हायर थिंकिंग स्किल्स कहते हैं. अब यहाँ पे हम 3 और 4 में उन चीजों के बारे में क्वेश्चंस करते हैं जो बच्चे के सामने होती हैं, और उन चीजों के बारे में भी क्वेश्चंस करते हैं जो बच्चे के सामने नहीं होती. और the child has to think from past experiences and talk about future events. So let's get started and talk about level 3 first. Level 3 जो है इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्किल्स इस लेवल पे बच्चा डेवलप करता है और ये किस एज पे डेवलप होते हैं. सबसे पहले आई लेट यू नो अबाउट द एज. लेवल 3 की एज होती है, यू कुड से 4.5 till 5. 4.5 साल का बच्चा और 5 साल का बच्चा ये सब स्किल्स सीख लेता है जो अभी मैं आपको बताऊं. इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स होते हैं जो बच्चा सीखता है. फर्स्ट इज रीटेलिंग एंड सेकंड इज सीक्वेंसिंग, और यही इसका मेन नाम. What does retelling mean? As the name suggests, retelling का मतलब होता है कि अगर कोई स्टोरी बच्चे ने सुनी या कोई इवेंट हुआ घर पे या स्कूल में कहीं पे भी, लाइक बर्थडे पार्टी, ईद या कोई भी फंक्शन हुआ, तो बच्चा will start talking about those events. आपसे उस इवेंट्स के बारे में बात करेगा, और आपको जो आपने स्टोरी सुनाई उसके बारे में बात करेगा, और आप उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस करेंगे तो बच्चा उसका अप्रोप्रिएटली आपको आंसर करेगा. यूजुअली हम बच्चों को पेरेंट्स, टीचर्स, थेरेपिस्ट स्टोरीज सुनाते हैं, और फिर हम एट द एंड ऑफ द स्टोरी वी डू एक्सपेक्ट, और बच्चे से हम पूछते हैं कि क्या था स्टोरी. सो इस लेवल पे बच्चा शुड बी एबल टू रीटेल सिंपल स्टोरीज. जरूरी नहीं है कि एक पूरी डिटेल में स्टोरी बताए, बट जो एक मेन आइडिया है स्टोरी का वो जरूर बच्चे को पता होना चाहिए, और समराइज करके बताए जो इस लेवल में आता है. इसके अलावा एक और स्किल जो इसमें डेवलप होता है जो मैंने आपको पहले बताया, दैट इज सीक्वेंसिंग. जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, सीक्वेंसिंग मीन टू डू अ थिंग और टू एक्सप्लेन एन इवेंट और एनीथिंग इन अ सीक्वेंस. एक तरतीब से, एक ऑर्डर से कोई चीज बताना. अगेन आई विल गेट बैक टू द सेम एग्जांपल कि अगर आपने कोई स्टोरी सुनाई है, आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था स्टोरी में, तो बेशक वो 2 लाइनर दे, बट वो एक सीक्वेंस में. फर्स्ट ये हुआ, फिर ये हुआ, लास्ट ये हुआ. सो दिस इज व्हाट blank level 3 is all about. So ये main skills तो develop होते हैं, और बाकी जो skills हैं वो मैं आपको अब बताती हूँ जो और एक दो बहुत important skills इस level पे develop होते हैं. एक होता है to make basic predictions, कि बच्चे आप जो basic prediction है वो करने लग जाता है, कि अगर आप पूछोगे कि अब क्या होगा, बच्चा वो बताएगा. अब वो चीज उसके सामने नहीं हो रही, बट अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज करके वो फ्यूचर के बारे में बात करेगा. कि लेट्स सपोज इफ यू हैव अ ग्लास, आप पूछेंगे अच्छा कि गिर जाएगा तो क्या होगा, बच्चा कहेगा टूट जाएगा, पानी गिर जाएगा, या आपके पास फोन है, अगर आप कहते हैं कि फोन गिरेगा तो क्या होगा, बच्चा आपको आंसर करेगा अप्रोप्रिएटली एट दिस स्टेज. एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल जो यहाँ पे डेवलप होता है वो होता है टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स फीलिंग. दूसरों की अब फीलिंग्स बच्चा समझने लग जाता है जो इससे पहले एज सच फुली डेवलप्ड नहीं हुई होती. लाइक अगर यू हैव क्लीन द रूम एंड बच्चा हैज मेड अ मेस देयर, वहां पे सारा गंद कर दिया उसने, तो यू विल कम एंड आस्क हाउ वुड आई फील, मुझे कैसा लगेगा, यू हैव मेड अ मेस हियर. तो बच्चा आपको बता सकता है, यू विल गेट एंग्री और यू विल फील सैड. ये इमोशनल थोड़ी रेगुलेशन और इमोशन अंडरस्टैंड करना दूसरे की भी बच्चे को आने लग जाती है. तो और इसी में एक और इम्पोर्टेंट चीज कि a child start understanding set of instructions, like if you would say कि जाओ पानी लेके आओ and then close the door, ये एक set of instruction है. बच्चा is able to follow these instruction at level 3. So these are some of the skills, सबसे important skills जो level 3 में develop होते हैं. Obviously there are lots of other skills जो इस level पे develop होते हैं, but right now we are just summarizing and giving you a brief idea about each level. तो ये कुछ questions थे level 3 से. Now I'll move on to a slide जहाँ पे मैं आपको एक picture दिखाऊंगी. That's a scene from a room
और उसमें हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन की मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी कि आप क्या क्या पूछ सकते हैं लेवल 3 से. सो हियर इज अ सीन एंड आई हैव मेंशनड सम क्वेश्चंस ओवर हियर. सो एक क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं जो लेवल 3 का क्वेश्चन है, जो 4.5 साल बच्चे को आंसर करना चाहिए, कुड बी व्हाट विल द कैट डू नेक्स्ट, या ये ब्लैक कैट आगे क्या करेगी, या हाउ टू फीड द कैट. अब यहाँ पे एक सीक्वेंस आ जाएगा कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे. और लाइक दिस रूम इज मेसी, तो आप बच्चे से पूछ सकते हैं इसे कैसे साफ करेंगे. अगेन एक सीक्वेंस जो हमने डिस्कस किया उस पे अगर बच्चे की अच्छी होंगी तो ही वुड बी एबल टू टेल यू कि हाउ टू टाइडी दिस रूम अप. एक और क्वेश्चन जो लेवल 3 से हो सकता है कुड बी फाइंड समथिंग टू यूज विद दिस शर्ट. बच्चा कह सकता है कि आई कैन वेयर ब्लू पैंट्स विद दिस शर्ट, या कुछ भी, आई कैन वेयर शॉर्ट्स विद दिस शर्ट. So these are a few examples from level 3. Level 3 पे बच्चे को थोड़ा सा he has to think before answering, क्योंकि question is not right in front of the child. Now we'll move on to the next level, that is the last level, and it's the most difficult and most complex of all levels. इसका नाम, as you can see on your screen, is justifying. किसी भी चीज का जवाब. अगर कोई चीज हुई है तो बताना ये क्यों. ठीक है, अगर लेट्स सपोज मैं कहूंगी अच्छा ये फोन गिरेगा तो टूट जाएगा, बच्चा कहता है, बट देन आई वुड आस्क क्यों टूट जाएगा, या ग्लास है वो गिरा है तो टूट जाएगा, क्यों टूट जाएगा. नाउ ही हैज टू जस्टिफाई हिज आंसर्स, और रीजन देनी है कि अगर कोई चीज हो रही है, कोई काम हो रहा है, तो वो क्यों हुआ, कोई चीज क्यों टूटी, कोई चीज क्यों गंदी हुई. जैसे अक्सर हम ऐसे क्यों के क्वेश्चंस पेरेंट्स से पूछते हैं, बट यू नीड टू नो कि सबसे लास्ट लेवल है जो सबसे कॉम्प्लेक्स लेवल है. और यहाँ पे वही बात कि बच्चा अपने पास्ट इवेंट्स के से नॉलेज यूज करता है और अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है और फिर आंसर करता है. इसमें एक और स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलप होता है, दैट इज द एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई चीज, लेट्स सपोज ग्लास गिरा, टूट गया, मेसी हो गया, पानी गिर गया, देन हाउ टू सॉल्व इट. हम पूछेंगे अब आप क्या करोगे. सो a child needs to know कि आप इसको कैसे सॉल्व करें. तो these are the skills: justifying thinking, you to develop reasoning skills, solve problems. So these are, level 4 is mainly all about your why questions. क्यों वाले सवाल जो अक्सर हम अपने 2-2.5 साल के बच्चों को भी पूछ रहे होते हैं, जी क्यों हुआ ये आपकी, लेट्स सपोज आपकी शर्ट क्यों गीली हुई है, आपकी शर्ट क्यों गंदी होगी, बट दे आर नॉट at that level because this is the last level. So, and it's the most difficult level. So next time when you ask a why question to your child, अब आप जब भी अपने बच्चे को एक क्यों वाला, कैसा क्यों हुआ क्वेश्चन पूछेंगे, be mindful और अपने आप से एक दफा जरूर पूछें सवाल करने से पहले कि आपका बच्चा उस लेवल पे है या उसकी एज अभी ये है, या फिर obviously you need to know कि why level is the last level and it's the most difficult. और उससे पहले बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हैं और जो बच्चे को पहले सीखने चाहिए, एंड देन गो टू द व्हाई थिंग. और एक और चीज, वही बात कि हमेशा डेफिनेटली आपको भी नहीं पता होगा कि हाउ टू असेस. अगर थेरेपिस्ट सुन रहे हैं या पेरेंट्स सुन रहे हैं, आपको नहीं पता होगा कि कैसे असेस करना है बच्चे को कि उसका क्या लेवल. So if you are confused and you don't know, you are not sure about your child's language level, then just start from the first level. And then go forward. आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर जाएं और आपको पता चल जाएगा कि क्या लेवल है. और it's a great idea to start at a low level. एक और बहुत important चीज that I would like to tell you is only ask question if you feel कि वो question आपके बच्चे की लर्निंग में इजाफा करेगा या उसकी थिंकिंग एबिलिटी में इजाफा करेगा, सिर्फ तभी क्वेश्चन पूछे. क्योंकि अक्सर पेरेंट्स बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते रहते हैं और उससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और वो एक गलत चीज हो जाती है फॉर लर्निंग. सो only ask question if you feel it's going to add to what your child is doing currently, या उससे थिंकिंग इनकरेज होगी. और अगर आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चन से अभी बच्चा डिस्करेज होगा या आप उसे इंटरप्ट करोगे, then don't ask question. And one more important thing that I would like to discuss, that ask questions. जो भी अभी आपने सीखा, ये वाले क्वेश्चंस आप उन चीजों पे इम्प्लीमेंट करें जो बच्चे को मोटिवेट करते हैं, जिससे बच्चा जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है. लेट्स सपोज अगर बच्चे को आपके ब्लॉग्स बिल्ड करने में इंटरेस्ट है, जस्ट डू दैट एक्टिविटी. और ये चारों लेवल्स आप उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं.
लाइक अगर हमें पूछूं आपसे थर्ड लेवल का अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बच्चे ने एक टावर बनाया ब्लॉक से, एंड इफ यू वुड से व्हाट विल हैपन अगर मैं नीचे से ब्लॉक निकाल देती हूँ, क्या होगा? यू आर नॉट डूइंग इट, बट बच्चा हैज टू आंसर कि अच्छा निकलेगा तो गिर जाएगा, यू नो दैट्स हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट, और उन्हीं चीजों पे इम्प्लीमेंट करें जिससे बच्चा मोटिवेटेड रहता है, बिकॉज दैट्स हाउ अ किड और एनीवन लर्न. और this is all about, obviously, I will conclude my session here, and this is all we have for today. So you need to know that there is an art to questions. You know, questions are very important part of your communication, because different questions will give you different information, and you know, that's how we get information when we need it, and that's how we get help when we need it. So it's very important to know what level and what type of question to ask. So अभी हमने जो भी चीजें डिस्कस की वो सारी समरी थी ब्लैंक लेवल की. Obviously इसकी बहुत डिटेल है, और that's why we have planned to, you know, do a paid workshop and or a paid webinar on this, because जिसमें आपको हम being a parent, being a student या being a professional, इसकी जो सारा बैकग्राउंड है वो डिटेल में बताएंगे कि इसका पर्पस क्या था और कैसे ये चीज ओरिजिनेट हुई, और सेकेंडली हर लेवल को बहुत डिटेल में बताया जाएगा, बिकॉज अभी जो चीज आपको हर लेवल पे बताई है, दैट वाज अ समरी एंड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन of all the things. और इंशाल्लाह we'll be, you know, सारी रिसोर्सेज आपसे शेयर करेंगे जो हर लेवल से रिलेटेड होगी, और हर लेवल का जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड रिसोर्सेज होंगे दैट यू कैन इम्प्लीमेंट राइट अवे इन योर थेरेपी सेशंस और विद योर चाइल्ड एट होम, जिसमें पिक्चर्स होंगे, फ्लैश कार्ड्स होंगे, वर्कशीट्स होंगी, और कुछ एक्टिविटीज आपको डिजाइन करना बताया जाएंगी, जो जिसपे आप हर लेवल के इवन हर क्वेश्चन को डिटेल में इम्प्लीमेंट कर सकते. Thank you. It's you know, that's all from my side, and Thank you. now over to Ms. Shah. Yeah, thank you, Ms. Sahar, for this for covering up your part, and also mentioning that we are going to offer paid webinar series for further detailed part on this particular topic. And now let's just get to the questions. So can I request Ms. Fariha Bukhari to take the questions? Ms. Fariha, can you take the questions? So whatever the questions are being asked from our audience, so over to you. So we just got a question from Anisa Ejaz. She's asking that what is the age of level 4? Yeah, sorry, I missed that point. जैसे मैंने आपको लेवल 3 का बताया कि वो 4.5 से 5.5 साल पे डेवलप हो जाता है. लेवल 4 डेवलप होता है 5 से 5.5 साल की एज में, और ये सारे लेवल्स like 65% of the children have a good, you know, एक उनकी अच्छी डेवलप्ड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बाय 5.5 साल तक सारे 4 लेवल्स की. एक 5.5 साल के बच्चे को सारे 4 लेवल्स का पता हो. Okay, sir, I want you to elaborate just the age group of every level so that everyone have a recap of that. अब level 1 is something, अगर मैं अपना प्रैक्टिकली देखूं और अगर हम अपने इर्द गिर्द जो बच्चे होते हैं उनको देखूं, तो level 1 is very basic, और जो 1 से 2 साल का 2.5 साल का बच्चा भी आराम से आंसर कर सकता है. और लेवल 2 जो है वो आप कह लें कि 2.5 से 3 साल पे जाएगी, और लेवल 3 4 से 4.5 साल पे, और लेवल 4 5 से 4.5 से 5 पे जाएगी. Okay, so everyone who is attending the webinar, kindly place your name and email address in the chat box so that we can share more details of our upcoming webinars and upcoming notifications and can share with all of you. So over to you, Misha. So we might be proceeding to our ending of the webinar. Yes, thank you so much for joining. And let me mention over here that this is Dysphagia Awareness Month, and my area of speciality is feeding and swallowing, because I worked in the field for the past 8 years now, and I have a hands-on experience with modified barium swallows and fiber optic endoscopic evaluation for swallowing. So if you're a student or if you're a professional who are looking forward to get hands-on information on what dysphagia is and how to manage that, then stay tuned, because
our upcoming webinar for this month will be on dysphagia, and we're going to share interactive resources and material that is not only going to help you, but take you on another level as a therapist. So with that, we three are signing off. And thank you so much for joining. The reason why I asked to just drop your emails and your names in the chat, because soon we're going to be giving you just a certificate of attendance that you just attended, participated in our webinars. So that will be easier for us to just notify you throughout the emails if we are going to have another webinar series. So we will send you an email, a personal invite for you all, so that you are first to know that what are we up to and what are our whereabouts, so that you get all the emails and latest updates in your chat box. And we look forward to have a healthy connection with you as the Speech Map community. So with that, signing off. Any parting message, Ms. Sahar and Ms. Fariha, anything that you want to add over here? So much, all of you, and we will be looking forward for your response. And inshallah, we will be organizing more informative webinar, and we will be requesting from all of you that our upcoming webinars would be basically this month would be the dysphagia awareness month, but we are expecting some more topics, and we are welcoming your suggestions that what you want to be discuss the topics, and which topic you want to be elaborated here in the webinar. We will be welcoming. Yes, do share your suggestions. Yeah, do share your suggestions, and thank you so much for your kind words, that it was really helpful. We are happy to hear that, and we look forward to connect with you all in future. And with that, we're signing off. Have a happy Sunday, and bye. Bye, everyone. Bye.